सो बेसिकली ये जो प्लेस है TNN मीन्स तामहिनी नेचर्स नेस्ट, ये वेस्टर्न घाट के जो एंडेमिक बर्ड्स है यहाँ पे, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है जो वेस्टर्न घाट से माइग्रेट करते हैं, वो अपने TNN तामहिनी नेचर्स नेस्ट का जो हाइड है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं. एंड we finally reached Tamhini Nature's Nest after little of missing out the route. It's delayed by more than an hour. We just had a breakfast here. Taste of Tamhini. So look at this mountain. It is quite high, and at the foothill that this is the place. You can see this road here. There's no signboard for Nature's Nest Tamhini. So this is the road. This road goes to Mumbai, and this I think goes to Pune. And this is the pathway to Nature's Nest Tamhini. So when you put the location, it will actually take you that point. So we've missed one's morning session, so we have to see how to cover that up. Maybe tomorrow morning we will be doing a foot trail in the nearby region. Parking space for many cars here. This is the entrance. Last time when we came here, we got around 15 species. We got 15 species in fact. And that time also the activity was mostly in the evening. And morning that was not much activity. Mostly red spur falls and all that. Now see, these are the two hides. This side, this is one hide. And this is the second hide. And there's another hide that side. So total 3 hides. Not people, so but I could see more. So, Prashant, how was your session today? This session is not that good till now. We got a blue cap thrush and Paradise Flycatcher. Let's hope for the best. We get some good one. By the Eurasian black cap. Here with us, Kala madam. Yes. So, how was your session? Anyway, it's nature, so we have to take what nature gives us and hope for the best. So Yes. let's see the second half is more productive. So, For a good second session. yeah. So let's hope for a good session now. The most probable the activity will start. What is the time now? It's 2 o'clock. 2 o'clock. So 3:34 should start good activity, because that is what last time what we observed. In that session we got at least 12 to 13 species.
So we have finished our 2 sessions today birding. Now we are going for night trail, looking for Scops owl. What are the species we are going to cover now? Owl species? Basically, we are trying for brown-wood owl, Yes. Oriental Scops Owl, rufous morph, which Yes. is rare actually, and the third one is Indian Scops Owl. Good. So that 3 species we are exploring tonight. Yeah. And also- what is the probability of finding it? Is it like 50-50 or you're going to definitely 90% yes. get 90%? Yes. Okay. Yeah. So let's hope to get a glimpse of that, or even a picture would be a great thing. Yes. Yeah. So we'll start with the trail now. So we are starting our trail now, night trail. So we are going to look for those 3 species of owl. It's 6:41 and it's already dark here. You can see here it's totally dark. So we are going to start our trail in a short while. Well, we're going to have a cup of tea here and start maybe in 15-20 minutes from here. Blue light hand. So we are ready for the night trail now. Yes, and hope for the best for the wood owl. Yes, all the best, guys. We were able to click Indian Scops Owl. The activity starts around it's 7 now. The activity starts maybe after 8:30, and today it is very windy, so the chances are also less of many birds coming. Maybe the activity will start in that case maybe 10 to 11, but evening time we got quite a few number of visits by Indian Paradise Flycatcher, Red-whiskered Flycatcher.
बेसिकली ये जो प्लेस है TNN मीन्स ताम्हिनी नेचर्स नेस्ट, ये वेस्टर्न घाट के जो एंडेमिक बर्ड्स है यहाँ पे, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है जो वेस्टर्न घाट से माइग्रेट करते हैं, वो अपने TNN ताम्हिनी नेचर्स नेस्ट का जो हाइड है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं। एंड आई होप आपने देखा होगा कि यहाँ के जो हाइड्स हैं वो तीनों हाइड अलग अलग है, एक ही वाटर पॉन्ड पे फोकस किए हुए, ताकि लोगों को अच्छे से अलग अलग एंगल मिले। एक हाइड है जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड मिलता है, दूसरा है जिसमें ग्रीन बैकग्राउंड मिलता है, तीसरा जो है नया बनाया हुआ वो ग्राउंड लेवल है, आई लेवल है, वहाँ से आपको थोड़े अच्छे शॉट्स मिलते हैं बर्ड के। एंड जैसे आपने कल से देखा होगा कि ये जो सारा प्लेस है ये पूरा जंगल जो है वो वैसे ही प्रोटेक्ट किया हुआ है। वहाँ पे आप हाइड के अलावा यहाँ पे अगर आप इस एरिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं, छोटे ट्रेल्स है यहाँ पे, लाइक जैसे लोग लंच के लिए बाहर आते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आते हैं, तब इस एरिया में कैमरा लेके घूमते हैं। ये जो पाथ बनाया हुआ है यहाँ पर भी लोग जाते हैं, ऊपर वहाँ पे हाइट्स है। और ऐसे इस पूरे एरिया में आपको वार्बलर्स वगैरह जो बर्ड है, आप अभी भी बर्ड के कॉल सुन सकते हो, बहुत सारे बर्ड के कॉल आ रहे हैं। सो लाइक स्मॉल वार्बलर्स वगैरह ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि ये पाथ हमें घर की तरफ जाता है, यहाँ से लाइक हम यहाँ से ऐसे जाएँ तो यहाँ से भी बहुत ही अच्छा भी ऊपर आता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ एकदम you feel that you get that feeling of you are in a nature jungle. Yes, and you can see the fruits. Yes, these are fig trees. फिग ट्रीज है यहाँ पे। तो ये जो फ्रूट्स है ये देखो, ये सारे पेड़ फ्रूट से भरे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जायंट स्क्विरल भी आते हैं, जायंट स्क्विरल भी देखने को मिलते हैं। कल ही गेस्ट ने एक पेड़ देखा, मेल फीमेल थे स्क्विरल्स के यहाँ पे, जायंट स्क्विरल के। और बहुत सारे बर्ड्स को ये जो वाइल्ड फिग का ट्री है इसके फ्रूट बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए बर्डिंग एक्टिविटी बहुत ही अच्छी रहती है यहाँ पे। छोटे छोटे ये जो फ्रूट के ऊपर वॉस्प भी रहते हैं, ये वॉस्प के लिए छोटे छोटे वार्बलर्स भी बहुत अच्छे थे। रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूरेशियन ब्लैक कैप, ये जो वार्बलर है ये इतनी दूर से यहाँ पे मिला। एक्चुअली इट्स अ फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र, सो एंड सेकंड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स भी आते रहते हैं यहाँ पे। तो टोटल कितने स्पीशीज अभी तक इधर साइड की है? अभी तक तो 70 to 80 स्पीशीज हमने यहाँ पे 80 स्पीशीज डिफरेंट सीजन। सो अलग अलग लाइक जैसे कि मानसून, विंटर एंड समर, ये 3 सीजन में अलग अलग टाइप के स्पीशीज मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो जैसे भी विज़िट करते हैं लोग तो हर एक अलग अलग सीज़न में हर एक विज़िट करते रहते हैं, ताकि पूरे ईयर अराउंड कुछ अलग अलग मिलता है यहाँ पे। तो ऐसा रहता है बर्डिंग के। और सिर्फ बर्डिंग नहीं तो मानसून में बहुत सारे लोग यहाँ पे हर्पिंग के लिए भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्नेक, गेको, फ्रॉग, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, ऐसे भी बहुत सारे मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ईयर अराउंड आपको डिफरेंट ऐसे बर्ड्स मिलेंगे। मानसून स्पेशल ओरिएंटल डॉर्फ किंगफिशर, विंटर स्पेशल एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर एंड रेसिडेंट येलो-ब्रोड बुलबुल, ऐसे अलग अलग आपको ऐसे स्लेटी लेग क्रेक, एमरल्ड डव, नीलगिरी वुड पिजन, व्हाइट बेली ब्लू फ्लाईकैचर, ऐसे डिफरेंट बर्ड डिफरेंट सीजन में आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो प्लीज़ कम, every season you will get different rare species here at TNN, Tamhini Nature's Nest. Thank you so much. Yeah, you are doing a great job. I like all the ambience here. You have a stay facility here also. Yeah. What is that total? 6 people can stay here in your premises. Yes. And what is the height capacity? It's 10 photographers and 5 observers can sit comfortably. Okay. Yes. Yeah. So nice meeting you. Hope we'll meet again. Thank you. Definitely. Thank you so much, sir. Thank you. Bye-bye. Bye. Ma'am, you can say something. Yes, we had a great time at Tamhini Nature's Nest, and based on this experience, we are again going to plan coming back when there is a lot of activity of birds. But before coming, we will be definitely confirming with Ramdas, and then we will plan our schedule. Thank you. Hi, it was an superb spent short vacation for us. Though the sightings were not that good, but yeah, it's all about nature, so you cannot like predict what you are going to get. Hopefully when we come back we might get some more good sightings, and yeah, we are planning to visit you again next month or in February for sighting of some good owls. And
Till then, happy birding. Thank you.